Interviewer need a high level information about what you have done. You have to introduce your certain skills. You have to introduce yourself. You have to introduce your previous activities that you have done in your career. Tell me something about yourself. Tell me. ये वो क्वेश्चन जहां से हम सोचते हैं कि हमारी इंटरव्यू स्टार्ट होती है और बहुत ही कैजुअली लेते हैं इस क्वेश्चन को. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. ये वो क्वेश्चन जहां पे हम ये सोचते हैं कि हमारी इंटरव्यू समाप्त हो जाती है. ये सभी क्वेश्चंस का जो जनरलाइज आंसर है मैं एक एक करके वीडियो में देता हूँ. सबसे पहला आज हम डिस्कशन करेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. टेल मी. तो जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है, तो ये जो क्वेश्चन है, चाहे फर्स्ट राउंड है, चाहे सेकंड राउंड है, चाहे डायरेक्टर राउंड है, चाहे प्रोजेक्ट राउंड है, चाहे मैनेजर राउंड है, चाहे क्लाइंट राउंड है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लगता है ये बहुत ही कैजुअली देने वाला आंसर है और बहुत कैजुअली लोग इसको लेते हैं. और इसका आंसर कैसे दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ. हाय, माय नेम इज अमित. I am from this city and I have done my graduation from APG University or a college from this particular degree. My father is in army, my mother is a housewife, my sister is in tech and I am engineer. I don't have any experience, or as you can say I have experience. Right now I'm working in this particular organizations and I used to stay at my home. My city has this, my city has that, and right now I'm working in this particular technology in this company on this project. This is how you're introducing yourself. What you are thinking, this question has been ignored by the interviewer? No. This question will give you the actual direction and this question has been listened by the interviewer very nicely. This is actually the first approach from your side, who you are, what you have done in your life or what you have done in your career. Tell me something about yourself. It means interviewer need a high level information about what you have done. There are some steps that you need to follow to give this answer perfectly, so that whatever answer you are delivering to the interviewer need to have certain direction. You have to introduce your certain skills. You have to introduce yourself. You have to introduce your previous activities that you have done in your career. This is the only thing that you want to answer in this particular question. Because if you are dealing or if you hesitate to answer this question nicely, it means you are not confident about your skills and the knowledge that you are going to deliver in this particular interview. हमेशा इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि इसको अपने स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है जो ये बता रहा है. अगर ये पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, आगे क्या करेगा? या फिर द थर्ड राउंड जो क्लाइंट राउंड है उसके अंदर ये क्या करेगा, या मैनेजर राउंड के अंदर क्या करेगा? यही क्वेश्चन ने आपके इंटरव्यू को डायरेक्शन देनी है. वो कैसे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में. पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ. फर्स्ट स्टेप है आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है सिंगल लाइन के अंदर. सेकंड स्टेप क्या है? यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर स्टडी, फ्रॉम विच कॉलेज और विच डिग्री यू हैव डन. थर्ड स्टेप है व्हाट ऑल प्रोजेक्ट यू हैव अंडरटेकन ड्यूरिंग योर स्टडीज एंड हाउ यू स्टडीड अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वट एवर फील्ड यू आर गोइंग इन. फोर्थ स्टेप है अबाउट योर सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट दैट यू हैव डिलीवर्ड इन द society or with the company or without company, whosoever, whatever you have done. So these are the 4 steps that you want to follow to make sure your interview goes in the right direction. Because if you fumble, if your communication is not perfect and if you don't practice who you are, then I want to make sure to you that your interview is going to be throughout. And 90% of people take this as very personal question or take this as very casual question. The people who take this question very seriously, they introduce themselves in a way so that interviewer will feel that this particular interview should be according to whatever he said. हिंदी में बताता हूं आपको कि जब आप किस क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, पर्सनली नहीं लेना इस आंसर को, इस क्वेश्चन को. दूसरा, कैजुअली नहीं लेना. तीसरा, इंटरव्यूअर को आपको इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि इंटरव्यूअर इसी क्वेश्चन से आपका थ्रू आउट इंटरव्यू प्रोसीड करे. मतलब यही क्वेश्चन आपका इंटरव्यू को डायरेक्शन देगा कि आपको जाना कहां है, एंड यू आर गोइंग टू गिव द डायरेक्शन. आप इंटरव्यूअर को फोर्स कर रहे हो कि भैया इसमें से क्वेश्चन पूछ. द फोर्सिंग इंटरव्यूअर टू आस्क समथिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन. दैट इज द कूल पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं. नाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट यू विल गेट टू नो, एंड आई इंट्रोड्यूस इन अ वे दैट यू विल गेट टू नो हाउ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Hi guys, my name is Rohit and I studied from CSE, Chandigarh Group of Colleges. I completed my bachelor's in electronics and communication. Over there I studied German programming languages like Java, C++ for the programming competitions. After that I studied and I represent myself in front of small companies or big companies, whatever you want to say. Then I learned myself and updated myself toward the certification, AWS certification, Salesforce certification, whatever I want to do.
And now I'm a certified Salesforce developer from past 6 months. So I have done internship in this company and worked on Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, whatever I have done. So this is how you want to introduce yourself in just 4 lines. Who am I? What I've studied? What I learned myself and took a certification. Third, what all projects I have taken or internship I've taken in the particular time when I got passed out from the company. So from these key points, okay Rohit, you have done this particular Sales Cloud or Service Cloud or AWS. Tell me something about the project that you have undertaken that you are telling me. Tell me from where you have started. So from this particular question, your interviewer is going to ask you something. So you are telling them what to ask. तो ये जो what to ask है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं. You know how you gonna get the desired salary? This question can give you the desired salary. What to ask? ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली, बट आपको ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए है. सो आई रिपीट माई सेल्फ. सो वेन एवर यू बीन आस्क्ड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सो यू वॉन्ट टू टेक इट वेरी सीरियसली so that you will run your car and take a smooth landing. And you can tell in just 4 lines, you have to tell everything about yourself. Who you are, where you studied, what you have done, which one certification, and what all projects you have worked on. These 4 things. That's it. You're done. No lengthy. Nothing about your personal life. Nothing about your college life. Nothing about your hobbies. No. Nothing is required. Thank you for watching this video. If you are looking for Salesforce job or something regarding the Salesforce, you can follow us on Instagram and WhatsApp groups. We are giving regular update of jobs on this particular groups. Thank you. And in next video, we are going to discuss about the last part and how to drive the interview according to you. Thank you guys. Have a nice day. Enjoy your day.